تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. انشاءاللہ you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. And I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan. You're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that shows that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں, don't you ever forget that you belong to a superior ideology. A little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Pakistan جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. انشاءاللہ you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. A question of when will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ ہی وہ آواز ہے جو ہر پاکستانی کے دل سے نکلتی ہے. غلام حسین صاحب, اٹس ویری آبویس, پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا اس کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی. بڑا اچھا ہے بات کی ہے. ہم تو چاہتے ہیں ان کا سر کچلا جائے دہشت گردوں کو. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری ہو. ہم تو چاہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو ملک میں. اور یعنی کشمیریوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں, ان کی پریئر جو ہیں وہ آنسر ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں. بالکل یہی کہا کہ آرمی چیف کہے یا پرائم منسٹر کہے یا خاور گمن کہے یا کوئی اور کہے, ہم تو سارے ایک ہیں اس پر. لیکن ہمارے جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو تو دور کریں. ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باہر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. فار وچ we are all together, no matter what. دشمن کا مقابلہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ 47 میں ہم علیحدہ کس لیے ہوئے تھے کہ ہم ان کے نظریے سے ایگری نہیں کرتے. ہم مسلمان اور پاکستانی اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں, اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. آج بھی 30 واقعات ہو رہے ہیں. لیکن مجھے خاور گمن صاحب جس چیز کا جواب نہیں ملا وہ میں ضرور پوچھوں گا, بار بار پوچھوں گا, کہ آیا یعنی سارے خطے میں سوائے پاکستان کی کہیں دہشت گردی نہیں ہو رہی اور کہیں نہیں بڑھ رہی. آپ کے 27 واقعات, کل بھی 3 کے پی میں ہوئے ہیں, اور بلوچستان میں کتنے ہوئے ہیں, میں نے
लाहौर से आया हुआ तो बेस से बंदा हटा हुआ तो उसको कई चीज़ें वैसे ही नहीं पता लगती। तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, फौज और अवाम एक है। सियासी इस्तेहकाम और इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं जो लेने चाहिए। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। चैलेंजेस हैं हसन अयूब, अंदरूनी बैरूनी, उनका मुकाबला हमने करना है और करते रहेंगे। नहीं, वो टेररिस्ट के हवाले से तो बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दे दिया है कि सून वी विल बीट द हेल आउट ऑफ दीज टेररिस्ट। लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट है। और दूसरी ये बात है कि हार्ड स्टेट का भी बता दिया है कि हार्ड स्टेट में हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक है, यानी जो कानून के मुताबिक जुर्म करेगा उसको फिर कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, कोई भी है वो। हम उनको नाराज बलोच का नाम देना चाहें या हम उनको टीटीपी या फितरा खारिज का नाम देना चाहें, वो टेररिस्ट हैं और उनको साथ टेररिज्म के जो कवानीन है उनके तहत ही डील किया जाएगा, उनको क्रश किया जाएगा। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह, उसके ऊपर जो है ऑलरेडी प्लानिंग भी है और एक फोकस भी है और काम कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि कितनी मुदल्लल गुफ्तगू थी आर्मी चीफ की, कितने सॉलिड और कॉन्क्रीट जो है उनके आर्गूमेंट्स हैं। और मुझे याद है कि एक दफ़ा आप मेरे साथ ही थे उस फंक्शन में भी कि जब वो उलमा के साथ उन्होंने खिताब किया था तो आप याद करेंगे उनका कदम बढ़ाओ आसिम मुनीर, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो जब जब जो है वो सिपा सलार हमारे गुफ्तगू करते हैं, खिताब करते हैं, तो वहाँ पर एक उनकी गुफ्तगू में, उनके खिताब में ऐसा जोश होता है, ऐसी चीज़ होती है कि सेंटिमेंट्स लोगों के बाहर आती हैं और फिर नारेबाजी होती है और उनके हक में नारे होते हैं और तालियां होती हैं और हमेशा होती रही हैं। लेकिन वो जो बात कहते हैं उस पर फिर अमल भी करते हैं। जो जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो अपना ब्रेन चाइल्ड लेकर आए SIFC के तहत, तो आपने मिनरल कॉन्फ्रेंस देख ली कि मिनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कई ममालिक से जो है वो आधी दुनिया तकरीबन पाकिस्तान आई है और आकर उन्होंने अपने हमारे जो मिनरल्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया है। दूसरा SIFC के तहत जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर तो आप देख लेंगे वहां पर अब कैसे जो है वो ग्रीन लश ग्रीन हो चुकी है, सहरा को ग्रीन कर चुके हैं। तो वट एवर ही इज सेइंग ही इज एक्टिंग ऑन इट और ही इज वर्किंग ऑन इट। वो फोकस उनका उसके ऊपर है और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। खैर यही उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी तरक्की की तरफ तो बढ़ चुका है। आप देखें कि कितनी जल्दी ये तरक्की की मनाजिल तय करेगा।